on with me. Now, on the evening of Monday, November 10, a Hyundai I20 with a Haryana registration plate exploded at the Subhash Marg traffic signal near gate number 1 of Delhi's Red Fort metro station. The tragic blast killed 12 people and injured more than 20 others. Several vehicles caught fire, panic struck, and a transnational terror module rose to the surface. Now, several pieces of the puzzle are falling into place, even as more questions come to the fore. Police and intelligence agencies have intensified their investigation, leading to massive raids and several individuals being detained. Several revelations have been unearthed, with investigators unlocking key links to the case. Massive raids and detentions are underway in Delhi, Jammu, Haryana, Uttar Pradesh, Telangana, Assam, and more. Let's in fact take you through the major updates from the pan-India search operations. All right, viewers, so we're going to give you a detailed update from the pan-India search operations, as I told you. And now Delhi police, viewers, now Delhi Police's special cell and other agencies have detained at least 10 people from several locations. Multiple vehicles seized as part of the probe, including a red EcoSport and a Breezer. All right, viewers, so that's the details we're getting you. And now 9 arrested so far. 3 doctors from Faridabad, Dr. Muzammil Ahmed, Dr. Shaheen Shahid, and a doctor from Sector 56. Preacher Maulvi Ishtiaq, accused Muzammil Shakil's landlord, has been arrested as well, and 4 lab technicians from Al Falah University have been arrested. Now, viewers, of course, let's get to Dr. Parvez, Dr. Shaheen's brother, who's been detained in Lucknow. Dr. Adil Ahmed, rather detained from Saharanpur. And Dr. Farooq has been detained from Hapur. So now, of course, that is in Uttar Pradesh, viewers. So that is the location of where they've been detained. And now going on to 6 arrests from Jammu and Kashmir that have happened. Arif, Yasir, Maqsood, Irfan, Zamir, and Dr. Sejad. That's in Jammu. 3 picked up for questioning, but not detained. Tariq, Amir, and Umar. Now, over 150 people have been detained by J&K police. Raids, of course, on in multiple places. Security tightened in Sopore. So that's, of course, in Kashmir that we're getting you the latest details on. And now Dr. Saeed Ahmed Moinuddin from Hyderabad has been arrested in Gujarat, turned home into reckon making lab, and conducted reconnaissance in Lucknow, Delhi, Ahmedabad. That's, of course, in Hyderabad, viewers. So reckon, of course, was that deadly poison that we were earlier telling you about. Now, 15 arrested from across Assam for controversial remarks on social media, detentions from different districts for alleged objectionable and inflammatory remarks. CM Himanta Biswa Sharma says arrests over provocative and communal posts. That's, of course, in Assam. Those details, viewers, are coming in from Assam. We're giving you a state-by-state update of what's exactly happening as far as the Delhi blast is concerned. All right, viewers, so that's, of course, all the details on those slides that I was talking to you about. And now, of course, viewers, we are, of course, going to give you every detail. And now I have reporters joining me from across different cities. I have Delhi, and I have Srinagar, and I have many other cities, viewers. Now, let me go to Delhi, to Javed Hussain, who's joining me from Delhi. Javed, जो लेटेस्ट जानकारी है आ रही है वो उसके बारे में आप हमें क्या बता सकते हैं? देखिए, अल्फला यूनिवर्सिटी की तरफ से पहली बार जो अल्फला के जो ट्रस्टी, उनके जो लीगल एडवाइजर, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि अल्फला को जिस तरीके से कहा जा रहा है कि फंडिंग हो रही है और जो बाहर से पैसा दिया जा रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अल्फला को जो अल्फला की जो फीस आती है उसी से अल्फला की जो है यूनिवर्सिटी रनिंग होती है। और इसके अलावा अगर सेंट्रल एजेंसीज और जो फाइनेंशियल जांच एजेंसी है
वो अगर किसी तरह से भी कोई जवाब मांगती है तो उसका जवाब दिया जाएगा। क्योंकि जानकारी यही आ रही है कि जिस तरीके से अल फलाह जो फंडिंग के मामले को लेकर जो कई सवाल उठ रहे हैं अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर कि एक ट्रस्ट के अधीन ये जो अल फलाह यूनिवर्सिटी चलता है, प्रवर्तन निदेशालय ईडी की तरफ से जो है इस पूरे मामले में ईडी की एंट्री हो सकती है। ईडी जो अल्फला के फाइनेंशियली ट्रांजैक्शन और तमाम जो फाइनेंशियल इनका जो एक पूरा फंडिंग है, किस तरीके से ट्रस्ट को ऑपरेट किया जाता है, किस तरह से इस पूरे यूनिवर्सिटी को रनिंग की जाती है, उसको लेकर जो है ईडी की तरफ से जांच की जा सकती है। यानी कि इस ब्लास्ट मामले में ईडी की एंट्री हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस जो है अब जो इको स्पोर्ट कार है जो कि कल खांदावली जो इलाका है फरीदाबाद में दौज के पास, उसे लेकर दिल्ली आ रही है और दिल्ली में उसकी जांच एक बार फिर से की जाएगी। इस पूरे मामले में लगातार गिरफ्तारी की जा रही है और आपको बता दें कि कल रात में ही देर रात सेंट्रल एजेंसी एनआईए ने डॉक्टर फारूक को है जो हापुड़ से दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश की जो एनसीआर का इलाका है हापुड़ से हिरासत में लिया है और ये शाहीन शाहिद के जो है इंट्रोगेशन के बाद से जो नाम सामने आया क्योंकि वो भी जी जानकारी के जी मुताबिक जावेद बने अल्फाज से रहिए हमारे साथ। नाउ आई हैव आशिक मीर जॉइनिंग मी फ्रॉम श्रीनगर। आशिक, ये जो 6 अरेस्ट हुए हैं जेएनके से, आरिफ, यासिर, मकसूद, इरफान, जमीर, डॉक्टर सजाद, इसके बारे में आप क्या बता सकते हैं हमें? Well, absolutely. What we are getting info from the ground that the multiple operations have been launched by the security agencies in South Kashmir and North Kashmir as well. Earlier, we have seen the CIK, which have raided almost 13 locations in South Kashmir, including Pulwama, Shopaya, and Anantnag as well. And almost 150 people have been taken to the custody for the questioning, and almost 4 to 5 doctors have been taken to the different police stations for the questioning regarding the Delhi blast. And earlier we have seen the high alert has been sounded in JNK as well. We have seen the railway stations have been put on high alert, and the security has been beefed up all over the JNK. And these operations are on, and we have getting the reports that the line of control areas have been also put on high alert because there were many infiltration attempts made by the terrorists in the recent past over the weeks. But now the security forces are continuing maintaining the vigil, and also there are investigations which are on in different parts of the Kashmir for the Delhi blast and the recovery. All right, Brian Thomas is joining me from the newsroom. Brian, over to you for the latest updates. Is the latest update regarding the Maruti Brezza. Now what we are getting to know, and this is the latest breaking that we are bringing out to our viewers, that this car, this Maruti Brezza was taken in the month of September, that was September 25th, and in a month and a half, 35,000 kilometers was driven by that very car. What Dr. Shaheen even told the JNK police, who are constantly investigating the matter, that the car was parked inside the university premises. Not only that, the JNK police requested the crime cell, Faridabad crime cell, the Delhi police, to take the car into surveillance. What we are also getting to know that the car was parked inside the students' wing. Now, another very interesting thing that needs to be noted, the fact that from inside the car, there were many things that were confiscated by the officials. The first being a apron coat, a doctor's apron coat, another being some papers, the car papers, documents of the car, another being in an envelope itself, there was a stethoscope and other doctor related documents. But yes, as per what the agencies have been finding out, collecting evidences, you talk about the CFSL or the crime branch team, the Faridabad police, nothing suspicious have been found so far. But yes, till now they found car documents, stethoscope and doctor's documents from the Maruti Brezza, which had driven for around 35 kilometers in 1.5 months. Yes. All right, Varsha Shah is joining me from Lucknow. Varsha, what are the latest updates when it comes to the Delhi blast?
ब्लास्ट को लेकर लेटेस्ट अपडेट यही है कि जिस तरीके से परवेज की जो गिरफ्तारी हुई, इसके बाद जो कनेक्शन धीरे धीरे शाहीन और परवेज से जो पूछताछ में निकलकर सामने आ रहा है, उसमें कहीं ना कहीं एक तरफ जहां अल्फला यूनिवर्सिटी की चर्चा की जा रही है, वहीं राजधानी लखनऊ की इंटीग्रल यूनिवर्सिटी की लगातार चर्चा की जा रही है। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से परवेज ने लगभग 4 साल 3 महीने यहाँ पर काम करके और उस तरीके से दिल्ली ब्लास्ट के 7 दिन पहले उसने रिजाइन किया, और रिजाइन करने के बाद जब दिल्ली ब्लास्ट हुआ तो उसमें जिस तरीके से जब सर्च ऑपरेशन हुआ तो उसमें एटीएस ने पूरी तरीके से जांच पड़ताल की और पता चला कि परवेज दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है उसमें पहले ही उसने इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से जो रिजाइन ले लिया था। उसके बाद अब धीरे धीरे जो परवेज और शाहीन को सामने लाकर जो पूछताछ हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं यूपी के अलग अलग इलाकों से लोगों को पकड़ा जा रहा है। हापुड़ से, सहारनपुर से, कानपुर से, आज कानपुर और सहारनपुर दोनों जगह से यूपी एटीएस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। फारूक और आरिफ, इन दोनों से पूछताछ की जा रही है। उसके साथ साथ जो मकान मालिक है जहां पर आरिफ जिस तरीके से काम करता था, वहां के लोगों से पूछताछ की जा रही है और ये समझा जा रहा है कि आखिर ये जो टीम डी थी वो किस तरीके से काम कर रही थी और किस किस इलाके में कितने लोग कनेक्ट है। क्योंकि जिस तरीके से शाहीन और परवेज की गिरफ्तारी के बाद एक एक करके अलग अलग जिलों की डिटेल निकल कर आ रही है, अलग अलग जगहों पर ये टीम डी के सदस्य मौजूदा नजर आ रहे हैं जिसको यूपी एटीएस गिरफ्तार कर रही है। एनआईए भी अपनी तरीके से पूरी जांच पड़ताल कर रही है और ये साफ तरीके से देख रही है कि दिल्ली ब्लास्ट का जो अहम पहलू था वो क्या था। क्योंकि अफरा तफरी में ब्लास्ट तो किया गया, लेकिन जिस तरीके से जो प्लानिंग थी वो शायद 6 दिसंबर की थी, जो कहीं ना कहीं बाबरी विध्वंस वाला दिन था, जिस दिन के लिए प्लानिंग की जा रही थी। और क्योंकि लगातार जब सर्च ऑपरेशन पहले जब शुरुआत हो चुकी थी तो लोगों को पता चल गया था इन लोगों को कि अब ये पकड़े जाएंगे और पकड़े जाने से पहले इनको कुछ ना कुछ तो करना है। और उस कुछ ना कुछ करने में दिल्ली का ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट होने के बाद इस तरीके से फिर से यूपी एसटीएफ, एनआईए और सारे जितने भी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो लगातार लगी और पूरी तरीके से लोगों को पकड़ने की कोशिश कर रही। अभी भी बहुत सारे नाम जो है वो इससे कनेक्टिंग है और वो धीरे धीरे सामने आते जा रहे हैं। क्योंकि जितने भी मोबाइल फ़ोन, जितने भी गैजेट इनके पास से मिले हैं उनकी जांच पड़ताल की जा रही है, उसमें से डिटेल निकाली जा रही है कि आखिर और कौन कितने लोग हैं जो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से कनेक्टेड है। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जम्मू कश्मीर पुलिस पूरे तरीके से हर राज्यों में जा रही है, हर राज्यों में अपने तरीके से जांच पड़ताल कर रही है, वहाँ के लोकल पुलिस से कांटेक्ट कर रही है और बता रही है कि आखिर देखिए जो अल्फला यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड थे वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर से भी कनेक्टेड थे, वो उत्तर प्रदेश से भी कनेक्टेड थे। और जब ये डिटेलिंग पूरी तरीके से हो रही है तो इन लोगों को तुरंत गिरफ्त में लिया जा रहा है और गिरफ्त में ले लेने के बाद अब पूछताछ पूरी तरीके से की जा रही है। मतलब प्री प्लानिंग इतनी बड़ी थी। और जिस तरीके से शाहीन के बारे में बताया गया कि वो जैश-ए मोहम्मद की विंग कमांडर के रूप में काम कर रही थी, महिला कमांडर, उससे भी कई ऑडियो सामने आई है। कई ऑडियो ऐसी आई है जिसमें साफ तरीके से सुनने को मिला है कि 25 अक्टूबर से ही जैश-ए मोहम्मद ने वो पूरी प्लानिंग शुरू कर दी थी। एक ट्रेनिंग चला रहा था और ट्रेनिंग में महिलाओं को तैयार किया जा रहा था। जो पहलगाम में जिस तरीके से जो आतंकवादी मरे, उनकी बीवियाँ काम कर रही हैं, पूरे पैटर्न को संभाल रही हैं। उनकी जिस तरीके से जो ये विंग चलाया जा रहा है महिलाओं का, इस पे काम भी किया जा रहा है और इस पे ये साफ तरीके से कहा गया है कि ये जो विंग पूरी जो काम कर रही है वो महिलाएं ही महिलाएं से कांटेक्ट में रहेंगी। वो किसी भी तरीके से गैर मजहबी पुरुष, गैर मजहबी महिलाओं से कोई कांटेक्ट नहीं करेंगे। इसमें एक चीज़ और साफ बताया गया, 3 से 4 महिलाएं अभी तक शहीद भी हो चुके हैं। इसके साथ 300 से 400 महिलाएं अभी इनके साथ अलग अलग जगहों से कांटेक्ट में हैं। वो 15 दिन की ट्रेनिंग ले रही हैं। 15 दिन की ट्रेनिंग में उनको मजबूत किया जा रहा है और उस तरीके से काम करने के बारे में बताया जा रहा है कि किस तरीके से वो इस सब चीज़ों को आगे लेकर बढ़ सके और एक बड़ी जमात को तैयार किया जा सके। तो एक एक जो चीज़ें सामने आ रही है उसमें ये पता चल रहा है कि आखिर किस तरीके की प्री प्लानिंग पहले से चल रही थी। और क्योंकि कहा जाता है कि इस जमात में महिलाओं को पहले आगे नहीं रखा जाता था, लेकिन अब जिस तरीके से जो चीज़ें सामने आ रही है, जो ऑडियो सामने आ रही है, जो चीज़ें रखी जा रही है, उसमें अब महिलाओं को टारगेट करके, महिलाओं को आगे रख करके ही सारी चीज़ें की जा रही है। महिलाओं की अगर
टीम तैयार होगी तो जाहिर सी बात है एक तगड़ा मुकाबला भी देखने को मिलेगा। और ये बात इन सभी चीज़ों में साफ तरीके से रखी गई है कि जो महिलाएं तैयार हो रही हैं, जो महिलाएं बन रही हैं, वो अपने स्वरूप के रूप में काम भी करेंगी और अगर वो शहीद होती हैं तो उनको जन्नत मिलेगी। मतलब इस तरीके का ब्रेन वॉश समझिए कि ये अलग ही तरीके का ब्रेन वॉश है कि महिलाओं को बनाया गया, महिलाओं को जिम्मेदारी दी गई। शाहीन भी उस पूरे कमांड को लीड कर रही थी और कहीं ना कहीं लीड करने की वजह से जब शाहीन का नाम आया तो कहीं ना कहीं हैरानी हुई, क्योंकि पढ़ी लिखी महिलाएं, पढ़ी लिखे लोग, व्हाइट कॉलर टेररिज्म की बात अब हम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहले ऐसे नहीं हुआ करता था। पहले जो जिम्मेदारी ली जाती थी वो पैसे दिए जाते थे, पैसे देने के साथ साथ उनका माइंड वॉश किया जाता था। लेकिन अब जिस तरीके से ये चीज़ें सामने आ रही है, इनके पास ऑलरेडी पैसे हैं, ये लाखों रुपए हर रोज़ कमा रहे थे और उसके बावजूद भी इनका दिमाग उस तरीके से काम करता था कि ये जिनको तैयार भी जी वर्षा, बहुत बहुत शुक्रिया सारी जानकारी के लिए। एंड व्यूअर्स, NewsX has its reporters spread out across the country to get you a minute by minute update on the Delhi blast. I have Nibir Dekar joining me from Assam. Now Nibir, the latest update is that 15 have been arrested for controversial remarks on social media. What more can you tell us? Well, absolutely. There has been a statewide crackdown as far as the controversial comments and misleading information on Facebook is concerned. There were a lot of comments being made by several users which have indicated this Delhi bomb blast to certain misinformation, and as a result of that, 15 people have so far been arrested. 5 people were arrested yesterday morning, and then later in the day, 10 more people have been arrested. A retired principal of a school was also detained earlier for trying to connect the issue of the Delhi bomb blast with elections coming in the country. So these kind of comments which have been sparked outrage on social media and also clearly providing misinformation, they have been picked up by the Assam police, and the Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma has stated that all-out measures have been done as far as the security is also concerned. The railway stations and the bus terminals have all been given extra security following the incident in Delhi. And further, he has stated that more than 35 people have been identified on social media who have been time and again providing misleading informations, and actions will be also taken against them and anyone involving in spreading misinformations or provoking the public into any sort of set agenda. All right, now I have Raj Kiran joining me from Hyderabad. Raj, Dr. Saeed Ahmed Moinuddin from Hyderabad से अरेस्ट हो चुके हैं गुजरात में, उसके बारे में आप क्या बता सकते हैं? The Gujarat anti-terrorist squad officials came down to Hyderabad to the residence of terror suspect Dr. Syed Ahmed Moinuddin, who stays in Rajendra Nagar, outskirts of Hyderabad, to search his house and his room. So Gujarat anti-terrorist squad officials seized some incriminated evidence from his room. The suspect, Dr. Syed Ahmed Moinuddin, a chemical has been, from the sources we have learned that a chemical has been recovered from his room now, and the Gujarat ATS officials informed the family that if needed, once again they'll come down to Hyderabad and check his room. So now his residence was locked now. And when we spoke to the Syed Omar Faruqi, a brother of the terror suspect, Dr. Syed Ahmed, he claims that his brother was trapped in a conspiracy. We had no idea any terror links on November 5th. He left for Gujarat on a business deal, but however, after 4 days, ATS officials informed us of his arrest in Gujarat. So Omar now, he also added that ATS officials later visited his residence in Rajendra Nagar, and searches was conducted at his house, and they also recovered a few of the chemicals and they have taken back to the Gujarat. So this is what we have learned from the Omar Faruqi, the brother of suspect Dr. Syed Ahmed. So now the Gujarat ATS police came down to Hyderabad yesterday afternoon and conducted the searches and recovered a few chemical substance which was alleged that this Syed was planning to mix a chemical in the water and prasadams in the temples. He has selected a few of the famous temples in Hyderabad where he is going to implement this plan within a month. So now after this came out, now the police have now recovered the few chemical substance from his residence.
All right. I'd like all my reporters to stay on with me, and viewers, we're getting some breaking news right now. Further information has been received about the Breezer car. It has been driven 35,000 kilometers in a month and a half. Arrested Dr. Shaheen herself informed the Jammu and Kashmir police that the car was parked at the university. Jammu and Kashmir police had asked Delhi's special cell and Faridabad's crime branch team to immediately take the car under surveillance. Shaheen's Breezer car was parked next to the building where Al Falah University is training students live. Now, car papers, a doctor's coat and a stethoscope were found in an envelope inside the car. After a thorough inspection of the car, no suspicious object was uncovered. I have my colleague Brian Thomas joining me with more details. Brian, what can you tell us about these new developments that are emerging? Yes, clearly in the morning itself, a mysterious car, the third car came into light. That was the Maruti Brezza. Then yes, the investigation agency started working, ramping their efforts up, and then Dr. Shaheen also spoke when in the interrogation itself. Dr. Shaheen said to the Delhi police, the crime branch, the fact that Maruti Brezza that was registered by her name, bought in the month of September, that was 25th September, new car, BS6 vehicle, CNG owned car, was bought by Dr. Shaheen, was parked inside the university campus. Now it was in the students living mess where they stay, the living area rather. Outside that the car was parked, and then the J&K police started investigation, and then the J&K police requested the Delhi crime branch, the Faridabad police crime branch itself to take the car into their own surveillance. Now post that itself, the car, the entire inspection started happening. They started collecting evidences. The CFS team reached the spot. Not only that, we even broke in the news of the fact that in the early afternoon itself, the bomb squad also reached the site, and then after thorough investigation, what they found was doctor's apron coat, some documents of the car, the car documents, an envelope where the stethoscope was there, doctor's stethoscope was found, and some other related documents. But yes, no, after thorough investigation by the agencies, no suspicion material was found from the Maruti Brezza. But yes, it was registered by the name of Dr. Shaheen Shahid, who has been purchased on the month of September in the date of 25th. Yes. All right, Brian, and now we have some more breaking news coming in. Now, the Pulwama police today carried out coordinated cordon and search operations at multiple suspected locations across the district as part of the ongoing campaign against anti-national elements, including JKNOP and other subversive networks. The operations aim to intensify, identify and trace individuals involved in unlawful and anti-national activities, strengthen surveillance and ensure overall public safety, say police. I have my colleague Ashik Mir joining me from Srinagar. Ashik, what more can you tell us? Well, absolutely. The raids are ongoing since morning, and we have seen that many have been taken to the police custody. And the biggest development, what we tracked today, was another doctor who hails from the Shopaya district, and he was also taken to the custody for the questioning. And earlier that we have seen the input that one of the doctors who was a president in 2023 in the Kashmir Doctors Association, and he was terminated on the basis of terror things. And then he left Kashmir and joined the Faridabad University Al Falah. And another doctor, Muzammil, was also terminated on the basis of terror things. But how these doctors went there and they were doing their job, and this is the security concern, but the security agencies are tracking now. But right now we have seen many raids which are ongoing since many days. Yesterday we have seen raids in South Kashmir and North Kashmir, including Central Kashmir as well. And many people have been taken to the questioning. And earlier we have seen the DNA sample was collected from the Umar's mother, and that matches today. This was the biggest update what we got today. Now the security forces are already on high alert because there may be many arrests in coming days. So far, there are multiple search operations ongoing in Kashmir as well. Over to you. All right. I'd like to thank all our reporters for joining me on the broadcast. And with that, we're slipping into a short commercial break. Stay with us.